Focus. Ideate. Innovate. Enable. Hello and welcome to yet another edition of Investor Camp. This time we are in the pink city of Jaipur and I am standing in the lawns of Rambagh Palace, one of the most beautiful hotels. Used to be Palace earlier, of course. We are here for the Investor Camp. We have an audience of 200 people, so I'm looking forward to this. It's going to be fun. Let's get started. Here's our first expert, Ashwini Gujral, someone you see on the channel every day. He's going to explain the strategy in picking stocks using 20-day and 50-day moving averages. कैसे जो है आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स इज ग्रेट बट मार्केट जो है एक बारी जब रुख पकड़ती है किसी सेक्टर का या किसी स्पेस का, तो उसी स्पेस में बुल मार्केट जारी रहता है. फॉर एग्जांपल हमने एनबीएफसीज में बहुत बड़ी एक बुल मार्केट देखी है, हर तरह का एनबीएफसी ऊपर गया है. तो अगर आप सही सेक्टर का चुनाव कर लें और उसमें सही स्टॉक्स को चुनें तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है इन अ बुल मार्केट. स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मूव्स जो होती हैं वो चार होती हैं. बेसिकली एक फेज स्टॉक में होता है जब अक्यूमुलेशन होती है. इस बात सच है कमोडिटी के लिए, स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए. उसके बाद उस अक्यूमुलेशन पैटर्न में से रैली निकलती है. अक्यूमुलेशन के दौरान बड़े खिलाड़ी, कमर्शियल्स, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग अक्यूमुलेट करते हैं. जब रैली शुरू होती है तो इसका मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू होता है. फाइनली एक फेज ऐसा आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है, स्टॉक बहुत महंगा हो जाता है, उसमें खबरें भी बहुत बढ़िया आती हैं और वो स्टॉक जो है सारा डिस्ट्रीब्यूट जनरल पब्लिक को होता है और वहाँ से फिर एक डिक्लाइन शुरू होता है. पहली चीज़ ये है, हमें ये देखना है किस फेज में है. क्या हम अक्यूमुलेशन स्टेज में है, रैली में है, डिक्लाइन में है, कहाँ है. एक बारी आपको वो फेज क्लियर हो जाता है तो फिर पार्टिसिपेट करना आसान है, खास तौर पे एक स्विंग ट्रेडर के लिए. जब आप बाय साइड पे हैं तो आप स्टेज 2 को टारगेट करेंगे. जहां कहीं भी रैली का फेज चल रहा है वो शेयर्स आपको चाहिए. अक्यूमुलेशन में आप पैसा नहीं बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आप पैसा नहीं बनाएंगे. अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टेज 2 होनी चाहिए, बिकवाली कर रहे हैं तो स्टेज 4 होनी चाहिए. अब इसमें एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं. आपने रेलवे लाइन देखी होगी, उसमें क्या खास बात होती है कि वो कभी मिलती नहीं. ठीक है, आप दो एवरेजेस ले लो, 20 और 50 या 20 और 40, और उनको किसी भी चार्ट पे लगाओ. अगर वो रेलवे लाइन बन जाए, दैट इज योर स्टॉक. व्हाई? वो रेलवे लाइन तभी बनेगी जब उसमें एक ट्रेंड होगा. अगर ट्रेंड नहीं होगा तो वो क्रिस क्रॉस करेगी. क्रिस क्रॉस वाली एवरेजेस वाले चार्ट में आपने नहीं जाना है. तो रेलवे लाइन में खरीदारी का टाइम तब आता है जब प्राइस जो है वो रेलवे लाइन के अंदर आए. ठीक है, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ बाइंग. सो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ अक्यूमुलेट ऑन डिक्लाइन. यू कांट जस्ट अक्यूमुलेट एनी स्टॉक ऑन डिक्लाइन. इस तरह के शेयर में अगर आप डिप खरीदोगे तो 95% वो आपके फेवर में वर्कआउट होगा. हमेशा एक तो स्टॉप्स यूज करें, दूसरा सिर्फ स्टॉक चूज ना करें, सेक्टर चूज करें. मैं हर बार कहता हूं कि 50% ऑफ अ स्टॉक मूव इज बिकॉज ऑफ सेक्टर, 20% इज बिकॉज ऑफ स्टॉक एंड 30% ऑफ बिकॉज ऑफ मार्केट. आजकल कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ स्टॉक? आईटी. भले ही प्रॉब्लम इन्फोसिस में है या बाकियों में नहीं है, लेकिन सारा सेक्टर नीचे जा रहा है. और ऐसे ही ये चीज होती है. जैसे आपने देखा वेल्सपन के बाद बाकी सारे टेक्सटाइल शेयर नीचे जा रहे हैं. तो जहां कहीं भी पूरे सेक्टर्स में आपको इस तरह की पैरेलल लाइंस मिलें, वही सही स्पेस है पार्टिसिपेट करने के लिए. और उससे आपको ये आप डेली एनालिसिस इस चीज में कर सकते हैं. तो हर तरफ कहीं ना कहीं करेक्शंस आएंगी तो आपको अगले दिन के लिए क्लियर स्टॉक मिल जाएगा जहां पे बाइंग ऑन डिक्लाइन विल वर्कआउट. हर स्टॉक में डिक्लाइन बाय करने से फायदा नहीं है. पहले सही स्टॉक सिलेक्ट करें और फिर उसमें डिक्लाइन बाय करें. Okay, time for our first break. When we come back, we'll talk about how the economic indicators are setting up and whether events like Brexit or US Fed raising rates will they have an impact on the economic aspects and in turn on stock markets. That's something that we'll discuss once we come back from the break.
Welcome back. We are here in Jaipur and for this investor camp where we have an audience of 200 people. And of course, before the break, you heard from Ashwini Gujral. Now we have from Yes Bank, Yuvika Oberoi, the economist at Yes Bank, explaining the current economic setup and how that's going to help you in stock selection. As per the IMF, the latest economic global growth forecast stands at 3.1%, which is the same as 2015, which means that the global economy is expected to do probably as good or as bad this year as it did in 2015. And mind you, this is probably the best case scenario. There are distinct possibilities of negative outcomes which are likely, which essentially will mean by the time we close 2016, the global growth actually is much lower than 3.1 that we are currently working with. And it's not just global growth, even global trade has been on a weaker front. So in this scenario of global environment where most of the countries are stuck in a phase of low growth, low inflation and easy monetary policy, what does India have to offer? Why should we be investing in Indian equities? The first takeaway is that India remains the fastest growing economy in the world and it enjoys a growth premium over the rest of the world. And we expect this growth premium, which is a markup of growth in India over the rest of the world, to improve in this year, that is 2016, by close to about 100 basis points. But what is in store over the short term, that is the next 6 to 8 months? The first key takeaway is that we have seen domestic policy environment undergo a gradual improvement over the last 2 years. This has largely been led by the government through a multi-pronged approach for enhancing potential growth through a variety of focused flagship programs such as the Make in India, Ease of Doing Business, Startup India. And we expect the lagged impact of these reforms to continue, the benefits of them to flow in the next 2 or 3 quarters. So with GST coming on board, it is expected that manufacturers will be a big gainers. Manufacturing costs are expected to come lower by about 15 to 20%, which will eventually get passed on to consumers like you and me. But what about the immediate triggers that the economy will offer for your investment decisions over the next 6 months? The first trigger is that of an above normal monsoon. With the 7th Pay Commission expected to put out payouts as early as August, September, and another tranche probably expected somewhere in next year, largely basis the allowances part, which is still pending. We expect this will be a very strong trigger for consumption, especially urban consumption. The third trigger that the economy will offer you is in terms of investment demand. So far, the pace of investment recovery has been tepid, and we expect this investment scenario to exit from the slow lane and probably do some speeding up towards the end of the year. Well, that was Yuvika Oberoi. Now to our final speaker, Ratnesh Kumar, because it all boils down to stock selection in terms of fundamentals, and that's exactly what he's going to do. When we're talking about where we are today, we had a huge slowdown in the investment cycle, in the investment spending, and we haven't come out of that as yet. So that's really important. In Indian history, economic history, macro history, you look at 10, 20, 30, 40, 50 years, we've never had a period of high economic growth without investments doing well. So that's something which I think is going to persist if you look at next 1 to 3 years, because in my view, while you do have concerns about whether the valuations are stretched or not, in my view, I think best part of this rally or the long-term bull market, as you may call it, I think is yet ahead, and I will explain why. What you've seen in the period over the last 6-7 years since the global financial crisis, as much positive attention that India might have been given good growth, corporate earnings have barely grown, 4-5%. So when you have earnings which haven't grown and your market is one of the better performing markets, so clearly the question is, have we become too expensive, or there's a long way to go on the earnings? My belief is the latter. I think whatever the headline numbers on the economy are, to my mind, some of that is not being felt at the corporate level. So from the market's perspective, the corporate sector's perspective, the best of the economic performance for India is still ahead in the next 2 to 3 years. I'll explain why. Firstly, you are beginning to see investment spending, which I have mentioned, dramatically slowed down. You are beginning to see initial periods of that reviving. Unfortunately, unlike in 2002, 2003, if you, some of you might have been there in the market at that point, you will remember, that was the last time when we had the investment cycle reviving, and we had a 5-year bull market after that.
Unfortunately, right now the situation is different. In 2003, corporates' debt-to-equity ratio were at a 10-year low. So, moment certain activities started in the economy, the golden quadrangle project, the corporate sector was able to immediately come in, take on debt, and start spending. Now, the situation right now is reverse. Your corporate sector debt is at a 10-year high. We all know, the issues which are there with the NPLs, etc. So, unfortunately, the private sector this time will be very, very slow to pick up on the investment spending. But there are enough, investment spending happening from the government sector, public sector, which I hope will get the investment cycle going. Next thing is GST's impact is not yet felt. Monsoon's impact is not yet felt in the economy. Pay commission's impact is not yet felt. And for the longer term, there have been a lot of sectors which have been opened up for FDI. The impact of that investment is not yet felt. So if I'm looking at 2-3 year horizon, I'm quite optimistic that the economy that you'll see will be much better than what you've seen in the last 2-3 years. And the valuations which might look stretched won't be stretched if corporates begin to surprise positively on earnings. Last 5 years, what you've been seeing is market starts to expect more and corporates ultimately deliver less. Now, you would come for a phase, because that has always been the case in the market. There would be a phase of positive surprises, and which is why my suggestion and recommendation is that being a long-term asset class, when you have these periods of doubt or so-called, I think resistance or valuation hurdles in the market, I think we have to stay true to our basic investment philosophy, which is that we continue to stay, invest in good stocks, good sectors, of course, and there could be times of volatility, which can be an added opportunity, but one has to just stay consistent and stay steady. So within that context, my belief is that you cannot have a better phase in the economy unless you have a better phase for the banks and the financials. So that is one sector which I'm particularly bullish on. In addition to that, I think some of the other domestic sectors. So largely, I think the focus right now should be investing in the domestic economy, recovering domestic economy, getting better. I think next 2-3 years, that is a place which is probably the best spot in the market. Okay, time for our final break, but once we come back, the most fun feature of Investor Camp, the interaction with the audience. Welcome back to the special edition of Investor Camp from Jaipur, the pink city of Jaipur. We are here at the Rambagh Palace. It's beautiful. And of course, you've heard from our experts, but it's time to question them. And here's the audience. And we had a lot of questions actually this time round. So here's a snapshot of all the questions that were asked and all the answers. मेरा सवाल सीधा सा है, भारत में ही ओनली ग्रोथ जो आ रही है और जिस रैली के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, तो वो मिथ तो नहीं है? नहीं सर, ये मिथ नहीं है. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अपनी प्रेजेंटेशन में भी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इंडिया में जो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं. एंड ग्लोबली देखा जाए, इंडिया ऐसा देश नहीं है जिसमें ग्रोथ है. पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ अब यूएस में भी दिखना शुरू हो रहा है. यूएस में भी फेडरल रिजर्व बात कर रहा है वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की. तो ऐसा नहीं है कि मिथ है, बट हाँ ये भी सच्चाई है कि ग्लोबली इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है. चैलेंजेस हैं विच आर रीजन स्पेसिफिक ऑल्सो. अगर आप यूरोजोन देखें उनके अलग चैलेंज हैं, अगर आप जापान देखें उनके अलग चैलेंज हैं. बट अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज देयर आर पॉकेट्स विच आर डूइंग वेल एंड इंडिया हैपन्स टू बी वन ऑफ देम, विच इज लार्जली डोमेस्टिक ड्रिवन. ग्लोबली इतना सपोर्ट नहीं है अभी बिकॉज ज्यादातर देश अच्छा नहीं कर रहे हैं. बट जो डोमेस्टिक मोमेंटम हम देख रहे हैं वो मिथ नहीं है, वो एक रियलिटी है. मैं पावर यूर ट्रेड का मेंबर हूँ और उसमें जो अच्छे व्यक्ति ने अच्छा स्टॉक बताया हुआ है वो लो और भूल जाओ, और मैं लिया और भूल गया. 719 का लिया और जब 2 साल 3 साल बाद देखा वो 70 रुपए का था. तो मेरे को फंडामेंटल पिक्स लेने के बाद किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? मेरे को बताया गया आपके यहाँ से बिल्कुल नहीं. तो उसका क्या ध्यान रखना चाहिए? ओवर लेवरेज हेविली डेटेड कंपनी से दूर रहें. ठीक है, ये सिंपल लॉ है. अगर किसी पे उधार नहीं है तो चांसेस आर उसकी स्टेटमेंट्स भी ठीक होंगी एंड द कंपनी हैज बेटर चांस ऑफ कमिंग बैक. ये सारे जेपी, जीवीके, जीएमआर, इनमें एक कंसिस्टेंट फीचर है, वेरी हैवी डेट.
दूसरी एक चीज मैं बताऊंगा जो ध्यान में रख सकते हैं, अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी or any capital efficiency ratio, return on equity or return on capital employed, if those two things are higher than cost of capital for the company, तो समझ लीजिए that company can generate good returns over the long term. So that is one of the things, if you're looking at कौन से factor को देखें, so including looking at capital efficiency factor, return on equity or those kind of things versus what is the cost of the capital which comes into play, even leverage, etc. Those kind of things once you look at, and if they are on good ground, chances are those companies will do well in the future. On Thursday's closing bell, you discussed Nifty, and there was an expiry that the market might move towards 86-80 types of levels on Friday. But that doesn't happen. Nevertheless, in the backdrop of Yellen's speech and what the world markets are showing and what SGX is showing, Anuj might ask you this question on Monday morning. So I am asking right now, what do you feel on Monday morning? What's your outlook on Monday morning? See, if you hear me very carefully, so 8500 was my zone where all long positions should be closed. So if 8500 survives, then you should continue with your long positions, because if global markets don't fall drastically, chances are Indian markets will also not fall, and we will find support around 8500, 8550, and then move back up from there. Okay, in the back, yes. Yeah, lady, please. First, I'll come to you. Yeah. सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें डायरेक्ट मतलब शेयर खरीदनी चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? मैडम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, किस में बेनिफिट मिलेगा? दोनों के बेनिफिट है, दोनों के कॉस्ट है. अगर आप अपना स्टॉक खुद सिलेक्ट कर सकते हैं तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा. और अगर आप वो सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी बेटर रहेगा. म्यूचुअल फंड से भी बेटर ईटीएफ है, क्योंकि उसमें इंडेक्स है, आपको पता है आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड फिर फंड मैनेजर की फैंसीज पे चलता है. तो मेरे हिसाब से ईटीएफ पे पिछले एक साल में 40% रिटर्न आया, जो कि एक बुरा रिटर्न नहीं होता. तो निफ्टी जूनियर बेस, निफ्टी बेस बहुत बढ़िया ईटीएफ्स हैं. I wanted to know, how do you see the pharma stocks, specifically Suven Life Sciences, going forward in the short term to medium term? Are you invested in Yes. that? Okay. See, that's a stock specific question. I'll have to look at the stock, but overall the pharma space has bottomed out. If you see the index, it was going through an accumulation pattern, and it's now beginning to make higher highs and higher lows. Another stock you can look at is probably Natco Pharma. That's doing very well. Ajanta Pharma is doing well. But overall, that dip in the pharma space is now getting bought. Chances are money from tech is moving into pharma. So overall, in the next few months, it should do well. 15 साल पहले मैंने कुछ शेयर खरीदे थे. आज उनका भाव कोई 30 गुना हो गया, कोई 60 गुना हो गया. तो उनको बेचने का टाइम है या रोका जाए उनको? जैसे इनियोथ स्टाइल्यूशन है, रीसोर्स इंडिया है, कॉस्मो फिल्म्स है, क्यूमिंस इंडिया है, 3M इंडिया है, नेस्ले इंडिया है, कैस्ट्रोल है और गुजरात तेल के लिए. वाह, सारे अच्छे स्टॉक लिए हैं आपने. इनको रोका जाए, बेचता जब बेचता हूँ तो ये बढ़ जाते, तो बेचने की इच्छा नहीं हो रही. Something is working, why sell it? That's a simple thing. 50 साल नहीं बेचा तो भी होल्ड कर सकते. See, as I mentioned a while back, when you have a winner, that means a company which is doing well, nothing is going wrong. Unless as some gentleman mentioned that you buy it and you go to sleep on it. In between, a bit of health checkup is also necessary. That nabs ka uska chal raha hai, I think what infections are there. But if there is no problem with the company is performing well, share price is either going very well or well. I think history has proven, not just in India, worldwide, in equities, those companies are worth holding on for a long period of time. Obviously, every 6 months, every quarter, every year, as you see the performance, if you see some deterioration, unless you are seeing any deterioration in performance, not just stock price, but actual financial performance of the company, then there's no point exiting a good company. We have time for one last question. Yes, sir, since you're standing. No, in the back. GDP के जो आंकड़े सरकार पेश करती है, हर इकोनॉमिस्ट जो अलग-अलग, इवन मैंने डीके जोशी जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं सुना है उस पर CNBC पे. अब मार्केट में जिस तरह के कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से डिमांड कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. तो या तो सरकार ने पिछले दिनों कई सारे टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस में ऐड किए हैं, उनकी वजह से ग्रोथ दिखती है,
या ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े ही हैं? हमको इन पर रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? Excellent question, Yuvika. So it's not just probably people like you, investors, who are concerned about GDP, but even as an economist, हमें ये concerns हैं. हमारी economy के focus सब कुछ GDP पे निर्भर करता है, तो हमारे लिए भी ये बहुत important economic indicator है. Problem क्या हुई? या अभी करीब 1 साल पहले government revised the methodology जिससे वो GDP estimate करते थे. पहले वो क्या करते थे कि वो count करते थे कि से फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर में कितनी गाड़ियां बनी, 5 लाख गाड़ियां बनी या 10 लाख गाड़ियां बनी. अब जो चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी हुआ है उसमें अब वो वैल्यू एडेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वैल्यू एडेड क्या है कि पहले एक ऑडी और एक मारुति 1+1 2 थे. अब वो कहते हैं कि मारुति में वैल्यू एडिशन से कम है, एक ऑडी गाड़ी में वैल्यू एडिशन ज्यादा है. अब वो 1+1 2 नहीं, वो मे बी 3 है या 4 है. तो एक मेथोडोलॉजी में फर्क आ गया है जहां तक मैन्युफैक्चरिंग को मेजर करने की बात है. तो हम ये बोले कि ये जीडीपी ठीक है या गलत है, मेथोडोलॉजी को देखा जाए तो मेथोडोलॉजी बिल्कुल ठीक है. जो उन्होंने पेपर पे एक्सप्लेन किया है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, द जीडीपी नंबर लुक्स फाइन, बट the problem is that there is a mismatch between, like you pointed out, how the corporates are doing, what we feel on the ground, और जो लीड इंडिकेटर्स आते हैं जैसे IIP हम देखते हैं मंथली बेसिस पे, उसमें तो ग्रोथ बिल्कुल है ही नहीं. 2%, 1%, 3% का नंबर आता है. तो क्या मिसमैच है? मिसमैच यही है कि एक तो मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है. पहले जहां हम सिर्फ एक यूनिट की बात करते थे, अब हम एक वैल्यू एडेड की बात करते हैं. तो उन दोनों चीजों को कंपेयर करना भी फेयर नहीं है कि हम जो पुराने या लीड इंडिकेटर्स देखें और उसको जीडीपी से कंपेयर करें. बट हाँ, ये भी है कि जीडीपी मेथोडोलॉजी ऑन पेपर ठीक है, बट इवन एज एनालिस्ट वी आर स्ट्रगलिंग टू इंटरप्रेट दैट नंबर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, एंड आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. जब तक वो IIP की भी जो मेथोडोलॉजी है वो रिवाइज नहीं होती, वैल्यू एडेड वे में नहीं पहुंचती, तो वो डिस्कनेक्ट अभी थोड़े टाइम रहेगा जब तक हमारे डेटा कलेक्शन सोर्सेज इंप्रूव नहीं होते. सो दैट डिस्कनेक्ट विल रिमेन, बट ऑन पेपर द मेथोडोलॉजी सीम्स fine, but we'll have to live with it. Well, that's all from Jaipur for this investor camp. We'll move on to a new city for a new investor camp. Thanks a lot for watching. Focus, ideate, innovate, enable.